Good morning, student. My name is Vijay Kumar and I teach physics. So today I will give that what is the good morning, students. My name is Vijay Kumar. I teach physics. So today I will say something about what is the waves. So waves होता क्या है? Waves actually this is the disturbance. और ये जो डिस्टर्बेंस हो सकता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इन द फॉर्म ऑफ द प्रेशर, इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वेव्स एक्चुअली होता क्या है? वेव्स इट इज द डिस्टर्बेंस. इसका जो सोर्स होता है दैट इज द डिस्टर्बेंस, एंड ये जो डिस्टर्बेंस है आपका जो है इट प्रोपगेट थ्रू द स्पेस, जो कि अपने साथ जो है इट कैरीज एन मोमेंटम अलोंग विथ. Right? So we can say that waves is the disturbance and which carry momentum and energy through the space. अब हम आते हैं कि जो waves होता है वो आपका दो तरह का होता है. फर्स्ट जो मैकेनिकल वेव एंड अनदर इज अ नॉन मैकेनिकल वेव. ऐसा वेव जिसको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड दी मैकेनिकल वेव, और ऐसी वेव जिसको प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है दैट इज कॉल्ड दी नॉन मैकेनिकल वेव. नाउ वी आर कमिंग द मैकेनिकल वेव. अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें तो मैकेनिकल वेव जो है आपकी दो तरह की होती है. मैकेनिकल वेव फर्स्ट इज द ट्रांसवर्स वेव एंड अनदर इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव. What is the longitudinal wave and what is the transverse wave? In the case of the longitudinal wave, जो आपकी जो मीडियम पार्टिकल्स है that vibrate along the direction of the propagation of the wave. Like in the case of the longitudinal wave, suppose this is the direction of the propagation of the wave, right? Suppose the medium particle जो आपकी जो propagate कर रही है with a velocity of v, but the medium particles that vibrate along the direction of the propagation of the wave, suppose this is the mean position of the particle, और इस mean position पे जो है आपकी particle जो है vibrate कर रही है. This is vibrate along this direction, left and right. This is vibrate in this way, right? That is called the longitudinal wave. Okay. Another classification that is a transverse wave. So in the case of the transverse wave, the medium particles that vibrate perpendicular to the direction of the propagation of the wave. Suppose this is the direction of the propagation of the wave, and the medium particle that vibrate, this is the direction of the propagation of the wave, and the medium particle that vibrate perpendicular to the direction of the propagation of the wave. So this is the classification of the mechanical wave, longitudinal wave and the transverse wave. Another that is the non-mechanical wave. Non-mechanical wave एक ऐसा वेव है which doesn't require any medium to propagate. So for example, the electromagnetic wave, that is your non-mechanical wave. Now we are coming, there is a special wave that is called the traveling wave. So in the case of the traveling wave, the medium particle propagates along the medium.
जैसे आपका जो एग्जांपल हुआ दैट इज द स्ट्रिंग वेव, सो स्ट्रिंग वेव दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। उसमें जो मीडियम पार्टिकल जो आपकी जो प्रोपोगेट होती है दैट इज अलोंग द मीडियम। सपोज दिस इज योर स्ट्रिंग and medium particle that propagate along the string, and that is called the traveling wave, right? Now this is the traveling wave. Now next is your standing wave. So what is the standing wave? So in the case of the standing wave, actually in this case wave जो है आपकी propagate नहीं होती है, but all the medium particles they vibrate about their mean position with different amplitude. So this is your standing wave. So in the case of the standing wave, only the medium particles that propagate at the mean position. But actually this wave it doesn't move. ये जो wave है आपका ये move नहीं करता. That is the standing wave. But in the case of the traveling wave, this wave travels and the particle moves along the direction of the propagation of the wave. It moves along the direction of the propagation of the wave and along the medium. That is your traveling wave. The main difference between the traveling wave and a standing wave. So in the case of the traveling wave, all the particles, इसमें जितना भी particles है सभी की जो है amplitude same होगी, सभी की frequency same होगी. But in the case of the standing waves, all the particles that are vibrating with different amplitude in one loop. जैसे ये जो मैंने बनाया है, this is your single loop. In one loop, all the particles are vibrating with different amplitude. और ऐसा point जहां पे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं हो रही है उसको हम बोलते हैं नोड्स, और ऐसा पॉइंट्स जहां पे पार्टिकल की जो है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है दैट इज कॉल्ड द एंटी नोड्स. Now the most important thing that how we will write the equation of the traveling wave. Suppose this is the displacement of the particle, इसको हम y लेते हैं, and this is the mean position of the different particles. Means x क्या है? X is the direction in which all the particles are vibrating. So SHM basically waves क्या है? Waves it is the number of SHM motions, means all the particles are doing SHM motions at the same time and having the different positions. तो अगर हम बात करें, सपोज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. अब ये स्ट्रेट लाइन जो है सपोज इट इज मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ v, राइट? तो अगर मुझे इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन टाइम t के बाद लिखना है तो इसका हम इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? सो वी कैन राइट दैट हियर फर्स्ट दैट if suppose y is the function of x at time t is equal to 0, at time t is equal to this is the function of x, because इसका हम इक्वेशंस लिख रहे हैं, इसका इक्वेशंस क्या हो जाएगा? that is y is equal to we can write as the kx, यहाँ पे t का तो and it is at time t is equal to 0. so what is the equation after time t? so we can that equation as a function of x and t, that we can write this is the function of x plus minus vt. इस तरह से हम जो है वेव्स का जो है इक्वेशंस लिख सकते हैं. इसमें यह इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे there are two signs. The negative sign shows that
wave is traveling along the positive x-axis and the positive sign shows that wave is traveling along the negative x-axis. So this is your equations at time t is equal to 0. It is the function of x. So we have to write the equations of the SHA motions, that is as a function of x at any time t. That will be function, it is the function of x plus minus vt. Suppose अगर मुझे कोई, if it is given sinusoidal wave y is equal to a sin omega t. Suppose this equation is given. So just I am writing, this is our, this would be the function of x. This is kx. ये कोई आपका sinusoidal equations दिया हुआ है and it is given at time t is equal to 0. तो इसका हम equations कैसे लिखेंगे? So to write their equations, we can write y as a function of x and t, that is equal to, it is equal to a sin x plus minus vt. जैसे आपका sinusoidal equations दी हुई है, this is sinusoidal equations and it is moving with a velocity of v. So we can write their equations at any time t in this way. Again here positive sign, तो इस केस में जो है, जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन है, दिस इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो इस केस में जो इक्वेशंस होंगे आपके, that is y as a function of x and t, that will be equal to a sin k x minus vt.